नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है
पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। अमृत काल का ये पहला बजट
विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं।
आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं।
अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है।
भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत
हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं।
आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत,
समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास
SMEs, well, we don't have that data. Certainly we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns, so that data we will not have. But certainly, you know, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, you know, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer. I mean, all of you, if you all do your own calculation, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. Ma'am, very good afternoon. Congratulations on the budget. It's very clean, simple, nicely done. Ma'am, one quick question on CAPEX and one more on petroleum subsidy. Ma'am, your CAPEX for RE is lower actually in terms of the spend as of now. But the target is, you know, greatly stepped up for FY24. So what gives the confidence to be all utilized? That CAPEX RE is lower, ma'am. 7.28 versus slightly lower. And a big jump for FY24. So what gives the government the confidence that all of it is going to be utilized and well spent? That's one, ma'am. And second, ma'am, on the petroleum front, the LPG subsidy has been kept pretty low. You had announced certain additional measures last year in May, along with the deep cuts in excise on petrol, diesel. So what happens to those announcements regarding LPG subsidy? They have not been rolled over. And plus, ma'am, there is a demand coming in from oil cores now after LPG losses that you have made good by giving them money, that something needs to be done on fuel also. So would the government consider? The last bit, something has to be done for who? Basically, demand coming in from oil cores in terms of oil marketing company. Yeah, the money which is now being given is not for that. Not for that, ma'am. So, all of that. So, on your first question on capital expenditure. So, yes, the revised estimates are about 97% or 98% of the budget estimate. Yes, there is a slight deviation. It's mainly on the state capital expenditure, which is falling short of the 1 lakh crore. Actually, the central capital expenditure is going to exceed the budget estimates. State capital expenditure is not expected to reach the 1 lakh crore figure because some portions of the state capital investment scheme have reform conditions. So some states have not been able to meet some of the conditions. Therefore, we expect, I think the figures are there, about 76% of the state capital expenditure scheme is likely to be spent. That's the revised estimate. So the shortfall is actually on the state side, not on the central side. Point number one. What gives you the confidence next year? I think if you look at the allocations that have been made, they've made in actually the increments are in 4 clear areas. One, railways. The railways has enough projects to absorb the additional capital expenditure. The second, highways, they have adequate projects running to absorb this capital expenditure. The third is states, 30,000 crores. Now, yes, that there will always be a challenge, but I think the states are gearing up now. This 2 years of this experiment has helped them to improve their spending capacity. And we are also seeing an uptick in the second half of this year on the state capital expenditure. So I'm reasonably confident that the states will absorb the 1,30,000 that has been provided. And the other big item on the central side is the petroleum capital expenditure, which is for retrofitting of refineries to meet emission standards and pollution standards, and partly for augmenting our strategic reserves. So these, I'm quite confident that we'll meet the expenditure targets. Please.
तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 65,000 से 50,000 किया है और नेक्स्ट ईयर का 51,000 किया है। तो मैम, इससे हम ये समझें कि दो गवर्नमेंट बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होना था और जो दो इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो अब 2024 के बाद ही संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जो टारगेट ये कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा संजय सर से। जैसा कि आपको विदित है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो मार्केट कंडीशंस और कई चीज़ों से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट टारगेट है वो रखा गया है। Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, what was the new lower effective tax rate for high income group at this point in time? And also tax collection at source has been increased from 5% to 20% on overseas tour package. So what is the reason behind this massive increase? See, the tour packages are generally taken by people whose effective tax rate is certainly more than 30%. So if we are charging them 20% TDS, I don't think it is high. Our attempt always has been to charge TDS at more or less similar rates, if not exactly the same rates. So that answers your question number one. Question number two on, I think you are referring perhaps to surcharge, which has been reduced. Well, our rates, the highest tax rates in our country were amongst the highest, even more than, some of the developed countries. And so, in any case, it was introduced as an interim measure, and so that has now been reduced, so that the highest effective tax rate becomes 39%. I'd just like to supplement that. There is a consistent theme, if you see, both on the new tax regime and on the changes that you're seeing in this budget, that the move is towards lower rates but fewer avoidance measures and exemptions. So if you look at high net worth individuals, there are a number of tax avoidance removal measures in this budget, along with the reduction in surcharge. So if you look at market-linked debentures, if you look at very high value insurance policies and a few other measures, so the marginal rate is coming down, but some of the devices used predominantly by those in that highest marginal tax rate are also being rationalized. So it's not necessarily a net reduction, it is a reduction from a high marginal rate inducing certain avoidance devices to a lower marginal rate with fewer opportunities to avoid. 74, please. One's mind being part of a political party. But consistent with what we believe, we placed our emphasis and priorities on those. And that's what you've seen in the budget. मैडम, मेरा सवाल है आपसे। मैं संजय शर्मा हूं, लोकमत अखबार से। मैडम, आपके बजट में विपक्ष की तरफ से कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें थी। घर की महिलाओं को जो महंगाई से पीड़ित थी, रसोई गैस के सिलेंडर के दुगने दामों से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं आटे से लेकर के रोटी तक सारी चीजें महंगी हो गई है। तो क्या इससे आपको लगता है कि कुछ इसमें महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा और घर की जो रोटी है, जो घर की जो रसोई का जो सामान है, इस बजट से कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का निर्णय को
देखे होंगे कि गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसको आप बोलना नहीं है, ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। एक मिनट। साथ ही साथ जो है महिला जो है वो भी एक परिवार का सदस्य है, तो जो रिलीफ जो इतना टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स में दिया गया है वो भी परिवार के पास में और महिला के पास में आएगा, उसके हाथ में आएगा, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकती है। सो वो भी एक महिला के लिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि महिला के लिए नहीं है, वो भी महिला के लिए एक बेनिफिट है। गेहूं पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए टैक्स भी है। Ma'am, Meghna Mittal from ET Now. The fiscal glide path that you have given is 4.5% by 2025-26, which may be considered slightly bold, but does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years? Somanathan has already answered it. Yes, tax buoyancy, as you saw even yesterday, GST collection figures come. Direct taxation buoyancy is also observed in the current year. That is one thing. I think to the credit of this team, there's been a very robust management of macroeconomics. That certainly bears an impact. So all of us might talk about this particular step or that particular step, but I think together, revenue, expenditure, disinvestment, banking, all of us together have worked in such a way that where you can earn more through tax avoidance related measures, and similarly where you can bring in more people into the tax net, you are taking steps. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expenditure, committed expenditure or other expenditure, are all ways in which you're making money mean more, and for every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. I just wanted to add to your question. The estimates in the budget, the revenue estimates in the budget, do not assume a buoyancy greater than 1 for the coming financial year. It assumes a buoyancy of 1. Gross taxes are expected to grow by the same 10.5%, by which we have estimated the GDP to grow, which is slightly lower than the figure implied by the economic survey. And we are assuming only a buoyancy of 1. But if the period of this year is repeated next year, then it may in fact be more than 1. But we have taken a conservative assumption. And I think the very fact that the commitment to 4.5% was reiterated word by word in this budget gives you an indication that we feel that we have the means and the ability to reach that target by 2025-26. I would also point out that many of our expenditure increases are on discretionary spends. We have kept a very tight lid on the irreducible types of expenditure, and therefore there is room in the budget both on the revenue side and on the expenditure side for us to reach that fiscal deficit target 2025-26, and it is not likely that the finance minister has reiterated it in parliament today. Ma'am, Timsi Japuria from CNBC TV 18. Ma'am, I have two questions. Firstly, on the TDS reforms, you've come out with two specific reforms. One, 20% TDS on foreign investments. Why has this been introduced? Is it to curb the flight of capital or investments which was going outside the country? And secondly, on students who are going outside to study, on that also the TDS has come, there's a 5% that has been levied.
Or it has been it has been There is reduced? no change on education or absolutely not. That's wrong. Your facts are wrong. But what happens to the amount that one spends in staying there as a student? First correct the thing which you've said, because yours is a very powerful voice, and that can spread among your dost, and that can go out. No change has been made for education or health purpose, LRS. Please, I hope my voice is audible much more than Timsy's. Thanks for correcting me, ma'am, but on the foreign capital, on the foreign investment, the TDS of 20%, if you could I already explain the answered. I rationale. think this question was asked and I already answered it to say that this is actually coming from income, and the income tax rates for those categories of people who are using this LRS to send money outside is much more than 20%. And so they were in any case, to pay for the tax. And in case they don't have to pay for the tax, they can always get a refund. It is our impression, and there is enough information to indicate that there are quite a lot of people who are able to make these remittances, but whose tax returns are disproportionately low compared to what they send as remittances. Now that means if you don't collect the tax at source, you have to take measures later to catch them. That is much more difficult. If you are able to make remittances to invest in a property in Manhattan or in a stock brokerage account in Dubai, or if you are going to take a 30-day tour of the world, almost certainly your effective tax rate will be 20%. So, yes. We have learned from both the economic survey and the RBI report that there's a lot of public investment and private consumption. Are you still happy with the private investment? Are you still expecting it to grow? Or do you think for the moment it is only public investment that will go on? Hi, yesterday in the press conference, we answered this question, and we also had a slide up there in the presentation we made yesterday that private capital investment has been improving every year in the last 3 years. For example, in the first half of 2021, based on quarterly earnings reports filed by listed companies, the capital expenditure was 2.1 lakh crores, which increased to 2.4 lakh crores in 21-22 in the first half, April to September, and 22-23 it has gone up to 3.3 lakh crores. And then you look at the RBI survey on capacity utilization and investment spending plans of the respondents, there is a very clear sign that many private sector companies are looking to enhance their capital expenditure. So both in terms of intent and in terms of actual spend, private capital investment is showing very clear signs of revival. Thank you. Ma'am, this is Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, this is your 5th budget, and when you started in the first budget, you talk about India reaching to a 5 trillion economy by 2025. Just I wanted to know what is the situation, because yesterday CA has put another goalpost of becoming a 7 trillion economy in next 7 years. So what is happening to that target? That is my simple question. Say, we are moving along to achieve our targets, both mine and his. We'll achieve. Good afternoon, ma'am. This is Ethan from India Today Group. Ma'am, while calculating the fiscal match for FY24, how did you assume the disruptive variables like the crude prices and, of course, China talking back on commodity prices? What was the benchmark that you were thinking behind the rationale? This is a question that keeps coming every budget, and I keep giving you the same answer, that there is no part of the budget mathematics that has a crude price number as an input in any spreadsheet. See, because there is no direct subsidy on any petroleum product. Unlike the fertilizer price or the price of the MSP, these have direct impacts on the budget. The petrol price would have an impact only if it triggers some major change in the tax system. Otherwise, the petrol, diesel
oil prices do not directly affect our budgeting. So it is not that there were days, maybe 10, 15 years ago, when there was a lot of subsidy on these commodities. At that time, a crude price assumption was inherent in the budget. Today, there is no inherent crude. The assumption we are making in the budget is only that there will be no subsidies on petrol and diesel, and that global prices will be such that there will be no subsidies. What the global price will be, I don't need to make an assumption. So no assumption has been made. Confusion since last year when we referred to what was said in the economic survey as though it was said in the budget itself. The budget didn't say it then, the budget doesn't say it now. मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। पहला सवाल तो ये कि जब बात हुई थी एक तरह से मोदी सरकार की, तो कहा था अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और बहुत ही कड़े मेजर्स लिए गए स्टार्टिंग में, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि सरकार ने कड़वे घूंट पिए हैं जनता को खुश देखने के लिए। तो क्या ये चुनावी बजट है, इसको मानती है? और पहला ये, दूसरा ये कि इनकम टैक्स में जिस तरह से जो छूट की सीमा है, जो पहला फेज है आपका जिसमें 7 लाख तक की छूट है, तो उसमें वो फेज को लगता है कि इससे राजस्व पर भार पड़ेगा, कितना भार पड़ेगा, कोई एस्टिमेट है? We have said it in the budget speech itself as to what is the net revenue foregone. उसका घोषणा ही कर चुके हैं हम, हिडन नहीं रखे। तो वो क्या है? 35,000? 35,000 Direct taxes 37,000 crore, indirect taxes 1,000 crore, additional revenue through indirect taxation measures 3,000 crore, and so net is 35,000 crore. This is Anuradha from Economic Times. In your budget speech, ma'am, you spoke about the review of financial sector regulators. So can you elaborate a little bit more on that? Something? Some of these exercises, when the regulations are brought in, they serve a purpose, thereafter the economy changes. So all the regulators have been doing it as part of their exercise, but there's a time now to take up a comprehensive review. And you will recall, RBI had formed a committee, they did it in 2020, they came out with a report in 2021. That is an ongoing process, and other regulators also will travel in that direction, that their regulations are what the economy needs today, whatever tweaking is required, they will take up that steps. There's their own review, not by them. Ma'am, congratulations on your penultimate budget. And ma'am, am I audible, ma'am? Congratulations on last full budget, and I just wanted to understand, you have mentioned, alluded to Banking Regulation Act Amendment and Banking Companies Act Amendment. Is it an indication that this year we'll see privatization on that front, public sector banking front? And if you could also throw some light on what kind of amendment it will undertake, apart from, allowing public sector bank for privatization. These measures are for improving the governance of the boards and then investors protection, etc. These are not to do with any disinvestment or the privatization measures. These are the different set of measures. Over a period of time, the things have changed, and the Banking Regulation Act also fall in line, or not fall in line, has to be aligned with the present day needs, what the directors are, who can be there, what their terms are going to be. So those kind of amendments are there, and one component, of course, is on the investors protection areas as well. Good afternoon, ma'am. Rima from Potibimba Life. My question, my question is regarding MSME sector in the northeast, especially in Assam. During pandemic, that Assam handloom sector and bamboo sector badly affected. Many artisans forced to close their work. So in your budget,
you have saying something, MSME sector, you have given some relief and widen the possibilities. So as Gamusa also getting GI tag this time, so do you have any special relief for the Assam and Northeastern artisan, especially in the handloom sector and bamboo sector? In the last year's budget itself, I think for sustaining livelihoods and also making sure that the Northeast livelihoods are attended to, we came up with a specific program called PM Divine for the development of Northeast, and that was executed through the Northeastern Council. So that program continues, and that will take care of livelihood related, whether it is in the weavers or in any other such community. But after getting the GI tag in the Gamusha, do you have any special package for the encourage to the handloom sector? So that is something which the state government will have to tag along with the existing programs, either through the handicrafts program, the artisan and other things that we are coming up with, which the rules will come out, either they can use it or the textile ministries. I'm sure they can always find out from the textile ministry for GI tagged Gamusha, they can ask for a dispensation. So this is possible, but that is for the state government to interact with the respective ministries. So can you little bit elaborate what kind of I can't elaborate more, ma'am. You should ask the state government to deal with it for the respective ministry. In your budget relief, what kind of relief you have given? Can you little bit elaborate it? In my budget relief. The MSME sector. For MSME or for Gamusha or for GI, what are you asking? I'll send you some information. Ma'am, let's move on with other questions. Good evening, ma'am. Arup from Business Standard. Ma'am, in this year's fiscal policy statement also you're speaking about unprecedented global challenges. And again, you have not given forecast for the two succeeding years, in this case FY24-25 and 25-26, although you have an internal consolidation roadmap. So are we going to see this as a new normal where you're not amending the FRBM Act again and you're not giving two succeeding years forecast, but you will continue having an internal roadmap? Yeah. Yeah, but you're not amending for the third consecutive year, you're not amending the FRBM Act and you're not giving two succeeding years targets. Yeah, but we have given a glide path and we are every budget stating whether we are aligning with the glide path given or not, right? So that pandemic was the new normal for 2 years, hasn't it been? Hi, I'm Siddharth from Money Control here. The gross borrowing number is 15.4 lakh crores, net is the gross borrowing is 15.4 lakh, net is 11.8 lakh. Especially with real interest rates returning to positive territory in the last few months with the RBI hiking rates, do you see borrowing costs for companies rising, especially and perhaps the government crowding out the private sector, and could that impact private investments? So I think the question of crowding out, actually the increase in borrowing over the previous year is 8%. The economy has grown at a nominal rate of 15% over this same period. So this is a level of borrowing which I think will not lead to any incremental crowd out. In fact, as a percentage of the size of the nominal economy, the total gross borrowing is actually going to be lower in 23-24 than in 22-23. So incremental crowding out, I think, is not a significant issue, and that I do not think will lead to any impact on borrowing costs in the private sector. This is reiterating that point that expect the borrowings for the next year are of the same order what they are in the current year. Of course, the size of the economy has gone up. So it is not that the more money is being taken out of the savings which are available into the economy. So we don't see that impacting because it is of the same order. And even if you go 2 years back and just increase by nominal rates, the net borrowings are of the same order. In fact, they are less than 2% more than the actuals. The figures stated were, I think, for the BE, but actually it will be only
estimates are that it will be less than 2%. Economy is nominally expected to grow at more than 10.5%. So, I mean, that should answer your question. Paliwal from India Today. Ma'am, opposition parties have been calling this Nil Batta Sannata not good enough budget. Your comments? Follow your Hindi. Would you say that again? Ma'am, they said not good enough. Most of the opposition parties for the budget. Ma'am, your comment on that? What reasons, if I may know? Not good enough for? What reasons, ma'am? If you would like to repeat their words. They have said, ma'am, most of the political I'm parties. saying, if you could please repeat their words and say, not good enough, for what reasons per se? They said nothing for the, they said nothing much for the middle class. What? Most of the, yeah, this is what those parties. Ma'am, do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please do. Agle mein kya? Next question, please. Ma'am, my name is Mukesh and I work for Newsrise. Just wanted to know, is there a component of green bonds in the... does it contain green bonds also? I mean, what will be the component of green bonds? Sovereign green bonds. Repeat your question, please. You interrupted me. So basically, in this overall gross borrowing that we have for the year, what component of that would be in form of green bonds? See, for the current year of $2 billion, one installment has already been done 1 week back, another one will be done a week later. So for the next, and the monies which we are going to raise now through these bonds, $2 billion, will be used for the projects which have been identified. And if those projects require in the pipeline that there is more money, then we will raise money through the green bonds, but that will be part of the overall borrowings which have been suggested. Pardon? There is no target for green bonds for next year. It is something which will evolve as the year goes on. Ma'am, this is Premanshu from Anandaya Patrika. You have said that your capital expenditure has reached 10 lakh crore, but the interest payment expenditure that has also reached 10 lakh crore. And the interest payment burden, it is almost 40% of the revenue receipt. So do you think it is a matter of concern for? It is always desirable for a government to have its interest payments as low as possible. But you are aware of the reasons for which government had to borrow a lot over the last 3 years. And all that I can say is the borrowings have been used very constructively towards growth-inducing investments and have not been frittered away on unproductive expenditure. Therefore, if the economy keeps growing at the rate that it has started to grow at now, then this is unlikely to be an unsustainable debt burden. We are quite confident that the interest burden will gradually come down as the GDP keeps growing. And to sustain that growth, the quality of expenditure, the quality of government expenditure is increasing. The revenue deficit is falling even faster than the fiscal deficit. So we are actually seeing an improvement in the quality of public expenditure, which will enable us to sustain this higher interest burden, which is a result of history. 2 years of COVID, where the entire globe has seen an increase in interest burden in all governments all over the world. Good afternoon, ma'am. This is Karishma here from Business Today Television. Congratulations to you and everybody for yet another successful budget. Ma'am, you did talk about simplification of the tax regime. So my question is on the capital gains tax regime that was also expected. It was not a part of the budget announcement, but it's expected that a simplification could be done in the coming months. Is that something on the cards? And also, ma'am, secondly, no big bang announcements on cryptocurrency in this budget. What is the kind of update with the consultation paper that had to be submitted also to the FSDC? For your question, first question, I have no answer because it's your expectation, you kept about it for the last few months and then you want me to answer on that? But the revenue Oh, have they been? They've not told me about it. No. To say now. That's all right, but even then there's nothing to say now.
मैम मैं आलोक सीएनबीसी आवाज से हूँ सर। मैम मेरा सवाल यह है कि जो टीडीएस को लेकर क्लैरिफिकेशन आई है और उसमें खास तौर से जो 10,000 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कई सारी चीजों पर खत्म कर दिया गया है, खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी भी क्या सरकार काफी कॉन्शियस है या ऐसा लग रहा है कि अभी भी टैक्स लीकेज है वहां से, या बाकी चीजों पर भी जो खत्म किया गया है ये टीडीएस के लिए जो 10,000 का एग्जम्पशन, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, टीडीएस जो ऑनलाइन गेमिंग पे है अभी प्रत्येक विनिंग के ऊपर में था, लेकिन जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो कई सारे गेम्स मिलाकर के एक सेशन बनता है। एक गेम कोई नहीं खेलता है, कई सारे गेम्स जो हैं एक साथ खेलते हैं। तो इसलिए जो टीडीएस अब लागू होगा वो समस्त गेम्स पे सामूहिक रूप से, जब नेट जो विनिंग होगा, जो वो अपने पैसा जो एक अकाउंट में से वो निकालेगा, तभी उसके ऊपर में देखा जाएगा कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका विनिंग हुआ है, उसके ऊपर में टैक्स जो है लगेगा और उसी के ऊपर में टीडीएस भी लगेगा। और यदि वो 10,000 रुपए से अधिक है तो टीडीएस पहले लगता था, अब वो 10,000 की लिमिट हमने हटा दी है। तो लिमिट तो हटा दिया है, लेकिन ग्रॉस पे लगेगा और नेट पे लगेगा और प्रत्येक विनिंग के ऊपर में नहीं लगेगा। ये हमने बदलाव किया है। So 2 changes have been made. One is that the taxation will be on the net win, because in online games generally you play a series of games over days. You don't play it, just one game and, like you would be doing, say, race horsing would be, maybe once in a while. But this is over a period of time. So whatever are the net winnings, when you take that money from your account that you have made with the online gaming platform, the tax will be on that. So this is one change. The other change is that the TDS previously was on each winning, irrespective of the amount, on 10,000 and more. If the winning is 10,000 and more, so some of the online gaming companies were keeping winnings lower than 10,000, say 9,999. So that we have removed. So there is no now threshold on TDS. That is the second change. Hi ma'am, this is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know that there has been an upward revision in the small savings estimates for FY23. However, data suggests that there is a shortfall. So how do you plan to achieve it? Yeah, it's a good question, and it shows good awareness of our numbers. I'm happy to see people read our deep statements with so much attention. It is a good question. What I can say is the market borrowing number is completely firm. That will not change. The remaining numbers have a little bit of fluidity, whether it is small savings, state government provident fund is a very fluid number. See, because if state governments change that number, it affects the overall balance of our fund plans. Market borrowing number is firm. The small savings number is, there is traditionally a seasonality where a lot of small savings comes in the last quarter because people plan their taxes in the month of February and March. So there is usually an upsurge. Will it reach this number or not? You see, these numbers are subject to a number of assumptions. But we are confident that in aggregate, the other sources except market borrowing, the aggregate of them will be close to what we have estimated. And therefore, I don't think this will have any impact on markets. In terms of small savings, again, the date from which these new schemes come into operation is yet to be decided. So there are a number of factors on which the small savings number could fluctuate. But I repeat, it will not affect the market borrowing numbers. No, she's talking about FY 2023 is my impression. Current financial year. Yes, I'm also talking about that. Again, the next 14 months before the end of the year, I cannot be firm on next year's numbers, but they are as firm as we can make them 14 months ahead of time. Well, if there is a shortfall somewhere, there is an increase somewhere else. We have shown you all the numbers as to how we meet.
the deficit of this year, how is it going to be funded? I have the statement, you have the statement too, since you have obviously read it, so I don't need to tell you. So that's how we will fund it. So this is a big budget in which something goes up, something goes down, revenues have gone up, expenditures have gone up, some things have gone down. But in aggregate, as I said, we are confident of being within our market borrowing numbers. We are confident that the deficit that we have projected for the revised estimate is reasonable and will not be exceeded significantly. It will not be exceeded significantly. Beyond that, I cannot give you a pinpoint. You cannot land Boeing 747 on a helipad. So, it's a huge thing. There will be minor, fluctuations here and there. But at a macro level, our numbers are good. I am confident about us. मैम नमस्कार, मेरा नाम महावीर सिंह है, फ्रीलांसिंग करता हूँ। दो छोटे से स्पष्टीकरण चाहिए थे। एक तो 7 लाख रुपए तक आय जो आपने कर मुक्त की है, वो दोनों उसमें है, पुराना और नया, या सिर्फ नए में है? ओके। और एक आपने घोषणा की कि जो गाड़ियों के स्क्रैप के लिए सरकार कोई सपोर्ट कर रही है, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्यों इस तरह के उसको बढ़ावा दे रही? मंशा यही है कि एनवायरनमेंट के लिए पुराना गाड़ी को हटाना चाहिए, मगर वैसे बिना इंसेंटिव हटाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हटाने में से मुझे क्या फायदा है। सो इंसेंटिवाइज करना उसके लिए। Scrapping of vehicles and replacement of vehicles as well. What is the kind of outlay that will be there and that we'll see in the coming fiscal? I can see there are two parts to it. For the central government, all central government vehicles that are beyond the 15-year age limit will be scrapped. Those of them that need to be replaced will be replaced. This money is provided for in different departmental budgets because it is not a macro number that is planned centrally. The number is significant. It exceeds 1,000 crores. What it exactly is, I also don't know. I'd have to add it up from several books. For state governments, we are making this part of the scheme for state capital investment. If they need to replace old state government vehicles, then that support will come from this scheme, and they have to meet certain conditions on meeting the national scrapping policy. The aim is to get rid of polluting old vehicles in the government sector. नमस्कार मैम, प्रमोद शर्मा। मैम, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि लोकल फॉर वोकल, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट और अमेजन, इस चलते जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो सरकार की कोई ऐसी योजना है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, टैक्स जो मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ इन पे कुछ लगाने का जो लोकल के लिए तो जेम में पोर्टल में एमएसएमई को स्थान मिल रहे हैं। वो उनके अपने प्रोडक्ट्स को उनके द्वारा मार्केटिंग आउटरीच करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोविजन दे रहा है। सो उनके लिए पॉजिटिव एक्शन है उधर। Precise numbers I don't have at this point of time, but the scheme is that if there's an arbitration award which has already happened, either of the party, either a government department or a government undertaking has challenged it, or the contractor has challenged it, and that arbitration award is being contested in any court, then depending upon the level of the dispute, a settlement can be reached between the two parties so as to reduce the amount of litigation which will be there. Yeah, it will be a voluntary, see, it is voluntary. Any dispute can be settled out of court by both parties. Traditionally, there are difficulties for government to take a discretionary decision on settling a dispute. This standardized set of terms, depending on
nature of dispute and the level at which the dispute has been settled, or, has been where there's an arbitration award, where there's a court award, where there's a Supreme Court award. There are different levels at which there is certainty or uncertainty. We will be coming out with a draft scheme which will be put out for consultation very shortly from the Department of Expenditure. So, no, it is only for domestic. Only domestic disputes. It will not cover international arbitrations or international cases. Definitely not. Thank you. Want both of them to answer for each economic survey from his school of thought and us from our school of thought? We are not going to be talking about comparing the two and giving justification for one. They come from their school of thought and we do it ours, right? I understood the question, but you're trying to link the two which are not so related. That is economic survey. Yeah? That is exactly what I mean. The dated security figure will not change regardless of changes in the other figures. So second question. On the first question of 10.5, remember there's a difference between an estimate in an economic survey which is given for general guidance and a budget which has to be used to fund expenditure. So we have to have numbers which are a higher level of probability of being exceeded than the economic survey. So therefore, our number of 10.5 could come from any combination of inflation and real growth. We are expecting nominal growth to be at least 10.5%. That's the basis on which the budget is presented. Now that can come from multiple combinations. I cannot tell you that it will be 6 and 4.5, or will it be 6.5 and 4, or will it be 7 and 3.5, or will it be 5.5. I mean, these are all, we are reasonably confident that we will exceed 10.5% nominal growth for the purposes of estimating revenues, which is why we use that estimate. Whatever is stated in the budget speech, it is there, it is 11.8, it has been stated in the budget speech, and I know you have read this statement, so it is there, 11.8. Good afternoon, ma'am. I am Nikun Johari from Reuters. You said that there will be changes to improve governance for banks. So will there also be changes to the Bank Nationalization Act that will enable you to privatize two banks that you had announced earlier? And also, ma'am, is there a concern for the government? Our markets have fallen last few days because of decline in Adani Group stocks. So is that a concern for the government, because retail investors have also been impacted significantly because of this? I had answered that question earlier, that the proposed amendments have nothing to do with disinvestment or privatization of the bank. That is a separate chapter. As far as the second question is concerned, we in the government don't comment upon the issues relating with a particular company. New Nation.
सर क्या कर रहा है यार, बीच में आ रहा है। अब आइए प्लीज। मुझे उसका फोन नहीं मिल रहा है, उसका फोन नहीं मिल रहा है। As the BJP headquarters, quite clearly you can see the visuals of PM Narendra Modi reached PM Narendra Modi has now reached here at the BJP headquarters for the CEC, which is right there on the way. At BJP headquarters, you can clearly see the visuals of BJP's national president right now. He is standing there to see the Pranish Narendra Modi and the BJP CEC for the remaining team of
चल संगर बंद कर
जी सर। देखिए आज सुबह लगभग 3 फॉरेन नेशनल्स की टीम्स ने पर्वत गुलमर्ग की तरफ स्कीइंग के लिए अपना ट्रिप शुरू किया था। इनके साथ 2 लोकल गाइड्स भी थे। तकरीबन दोपहर को 12:30 बजे जो है एक मैसिव स्नो एवेलांच हापतखुर्द नाम की जगह पे हिट हुआ, जिसकी जद में ये स्की टीम आ गई। इसकी इत्तला मिलते ही कि पुलिस की रेस्क्यू टीम और उनके साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट और आर्मी की रेस्क्यू टीम्स ने जो है इस मौका वारदात पे वो गए और वहां से उन्होंने जो है 19 फॉरेन नेशनल्स और 2 लोकल गाइड्स को जो है रेस्क्यू किया। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में 2 फॉरेन नेशनल्स जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं उनकी डेथ हुई है। उनकी डेड बॉडीज को भी रिकवर किया गया है और फिलहाल उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लिया गया है। बाकी जो रेस्क्यू किए गए फॉरेन नेशनल्स और लोकल गाइड्स हैं वो सेफ है और उनको फिलहाल मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है।